1 is under the compulsory part, that is 5 plus 6 plus 6. So we have 5 marks, that is compulsory question 1 from the probability module. Then you have 2 6 marks questions. Okay. The total weightage of this chapter is probability. 3 questions are expected from here. Okay. So this is what we have already done, all these things. I'm just revising. Already you have done in 12th, 11th, 12th. What is a random experiment? What do you mean by a random experiment? Anybody? Experiment क्या होता है probability में जो हम लोग experiment करते हैं? What is that experiment? Okay, so I'll just give you like tossing a coin, throwing a die. Okay, all these are called as the experiments. When you're performing some activity, that is called as an experiment. What is that? Randomly picking things. Okay, so there are experiments in which the results may be altogether different, even though they are performed under identical condition. When you throw a coin, when you throw a coin, when you throw a die, when you toss a coin, all these are experiments. Okay, these are experiments. There are experiments in which results may be altogether different, even though they are performed under identical conditions. So, like tossing a coin or throwing a die is a random experiment. Okay. Then what is a trial? ये सब रिवाइज कर रही हूँ. Already you have done all these things. ट्रायल किसको बोलते हैं हम लोग? और इवेंट क्या होता है? What is a trial and what is an event? So trial is, again I'll give it, trial is performing a random experiment is called as a trial, and whatever the outcome we get, that is called as an event. When you toss a coin, tossing a coin is that's a trial, and the getting head or tail is an event. So tossing a coin is a trial, and turning up of head or tail is an event. Okay. Then we had equally likely events. Means what? As the name itself indicates, equally likely events. They have equal chances of occurring. When you toss a coin, you have the equal chances of occurrence of head or tail. So two events are said to be equally likely if one of them cannot be expected in preference to the other. You cannot say that only head will occur or only tail will occur. You have equal chances of occurrence of head or tail. That is why it's called as equally likely events. Both whatever are the outcomes, they have equal chances of occurring. So here the example is given that if you draw a card from a well-shuffled pack, we may get any card. Then 52 different cases are equally likely. You can have any card out of 52. So all the cards are having equal or have the chances of occurring equally. Mutually exclusive क्या होता है? What do you mean by mutually exclusive event? Two events are said to be mutually exclusive when the occurrence of one of them excludes the occurrence of the other. So suppose we toss a coin, we get either head or tail. We cannot have both together. Okay, so if head exists and tail cannot exist. So we say they are mutually exclusive events. Two events are said to be mutually exclusive when the occurrence of one of them excludes the occurrence of the other. Exhaustive events are the sample space, you can say. The set of all possible outcomes of a single performance of an experiment is a exhaustive events. Each outcome is a sample point. So sample space or exhaustive events, that is the meaning. That is the same. So if you toss a coin, then head comma tail is a sample space. Set of all possible outcomes of a single performance of an experiment is a sample space or an exhaustive event. Then we have, so how do you define a probability?
if the event can happen in m ways and fail in n ways, all these ways being equally likely to occur, then how do you define the probability of A? अगर एक event A है that can happen in m ways and fail in n ways, all these ways are being equally likely to occur, then the probability of happening of A is equal to, how do you write the probability? कैसे लिखते हैं? अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? कैसे लिखते हैं उसको? अगर सपोज हम लोग एक या थ्रो डाई एक थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, so total outcomes are 6. You can have 1 2 3 4 5 6, ठीक है. Now getting 3 while throwing a die, what is the probability of getting 3 when you throw a die? Yes, it is 1/6. And when you have 6 samples, the possible outcomes are 6. अगर हम एक die throw कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन probability of getting 3 will be only 1. That is 1/n. That is success. Probability of getting 3 is the success. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है. The event can happen in m ways, fail in n ways. जो हमको निकालना है वो सक्सेस हो जाता है. That is happen in m ways and fail in n ways. So total probability है वो नीचे आ जाता है, और that is equal to m/m plus n. Number of favorable cases upon total number of mutually exclusive equally likely cases, or I can write as m/m plus n. Total probability is m plus n. ठीक है. अगर हेड और टेल है तो टोटल हो जाएगा 2. ऑकरेंस ऑफ हेड हो जाएगा 1/2. अगर डाई है तो हम लोग लिखेंगे समथिंग अपॉन 6. जो हमको चाहिए वो ऊपर आ, जो सक्सेस है वो ऊपर आ जाएगा. So same way, if the event can happen in m ways, then you will get m/. This is the probability of the happening of A. Probability of not happening of A will be n/m plus n. नीचे जो है वो टोटल आ जाता है हमेशा. ठीक. So m/m plus a n, and then failing अगर निकाला तो n/m plus n, and when we add both, we always get the answer to be equal to 1. And the probability of getting head will be 1/2. Tail also 1/2. When we add 1/2 plus 1/2, we will get the answer as 1. Always when you add the probabilities of the success and failure, the answer is always equal to 1. Have you done this conditional probability? Okay, conditional probability is we denote it by P of A given B. मतलब है कि हमें probability of A निकालना है, provide given that the event B has occurred. The probability of happening of an event A such that the event B has happened is called as a conditional probability of happening of A on the condition that B has already happened. Okay, like you want to say that it is going to rain this afternoon. Given that it is cloudy, कुछ condition के अंदर you have to calculate the probability of A. That is called as a conditional probability. You have to calculate probability of A, but under some certain condition, that is B. That is P of A given B, and it is defined as P of A intersection B upon P of B. ये सब तुम लोग का हो चुका है पहले से ही. I'm just revising what you have done. Then we had additional law of probability. Additional law कब हमको अप्लाई करना है? जब हमारे पास सपोज n probabilities हैं और हमें निकालना है कि probability of any of these events will happen. Any of these events means or. Either P1 will happen or P2 or P3. जब or का जब term आता है, any of these events will happen, then the total probability is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4. Any one of these probability अगर occur होता है तो we have to add. And when you have both, then we say it's a multiplication. Okay, both will happen, then is the product of the probabilities.
वहां पे अगर P है, एनी वन ऑफ देम विल हैपन मींस P1 plus P2 plus P3. अगर यहाँ पे दोनों ही होना है तो P of A into P of B. Okay, we're not going to make use of all this much. Just revising जो किया है. Then we have partition of sample space. You have a sample space, ठीक है. उसके अंदर हमने ऐसे अलग अलग एक वेन डायग्राम इमेजिन करो. You are having a universal set that is S. Then you are having E1, E2, E3, En. They represents a partition of sample space S. उसके अंदर छोटे छोटे से स्क्वायर बना दो या सर्कल्स बना दो. एक पूरा वेन डायग्राम में पूरा जो है वो तुम्हारा S हो जाएगा. उसके अंदर you can draw small sets E1, E2, E3, etc. En. This is said to be the partition of the sample space A if you take, there is no common point between these two events. E1, E2 अगर लिया, there is no common point. जो भी sample space के अंदर है, उसके अंदर mutually disjoint sets निकालने हैं हमको. That is EI intersection EJ is equal to phi. There is no common points between any of these events. And if I take the union of all these things, it has to be the sample space, and the probability of all these events should lie between 0 and 1. Then these events are said to be the partition. These events are said to represent a partition of the sample space. एक बड़ा sample space है, उसके अंदर तुमने छोटे छोटे partition किए हैं. E1 को एक लिया, E2 को E3, ऐसे अलग अलग इसमें किए. So अगर हमें E1, E2, E3, En is said to be a partition of a sample space if there is no common points between the sets E1, E2, E3, En. And when you combine all these things, it has to be the sample space S. And if you take the probability of all these events, it has to lie. Probability always lies between 0 and 1 only. It has to lie between 0 and 1. You have done this Bayes theorem in 12th. Any of, I think CBSE, I don't know, Maharashtra board, I'm not sure. CBSE and ICSE students had this, I think. Yes, right? Bayes theorem. वो यहाँ पे same हमको repeat करना है. Do you remember how did we do that? Okay, anyway, I'll just revise. This is only theorem part of that. So I will not explain much on this. I'll just explain with the help of an example. ठीक है. Let the events A1, A2, A3, etc. An represents a partition of the sample space S. मतलब क्या होता है? Partition का मतलब होता है कि एक sample space रहेगा, उसके अंदर ये अलग अलग sets रहेंगे, और उसमें से ऐसा है कि कोई भी common points नहीं रहेगा ये सब sets के अंदर. And if I take the what is the union of all these sets, it is going to be the sample space S, and the probabilities are all lying between 0 and 1. The probability of AI given B is equal. Actually, this Bayes theorem is used to calculate the cause of the event. For example, I'll just explain the help of an example. अगर हमने suppose ये example लिया, ठीक है? I'm just giving a simple example. And urn 1 contains 3 white and 4 red balls, and the urn 2 contains 5 white and 6 red balls. One ball is drawn at random from the urns, and normally हमारे questions कैसे होते थे? एक बैग में 3 व्हाइट और 4 रेड बॉल्स हैं, दूसरे बैग में 5 व्हाइट और 6 रेड बॉल्स हैं. हम नॉर्मली क्या करते थे? एक बॉल निकालते थे और पूछते थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी व्हाइट. ओके, हमें रिजल्ट पता है उसका, हमें पता है जो बॉल निकाला है उसका वो व्हाइट है, लेकिन what is the probability that it was drawn from urn 1? This is the Bayes theorem. Okay, you know the answer, हो चुका है वो, तुम्हारा पता है कि बॉल तुम्हारा white है, लेकिन क्या probability है कि that was drawn from urn 1? That is called as the Bayes theorem. It's a reverse probability. We want to calculate the cause of that. Result हमें पता है कि white होगा, लेकिन वो white ball जो है वो urn 1 से निकला था कि urn 2 से निकला था, इसलिए what is the probability that it was drawn from urn 1? This gives the Bayes theorem. Okay, so अभी तक हम लोग क्या करते थे? One ball is drawn from one of the urns, and it was, and we what is the probability that the ball drawn is a white? यहाँ पे ball drawn is a white, we know that.
लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, दैट इज द बेस थ्योरम। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं हमको बेस थ्योरम से करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट हमें क्या पता है, रिजल्ट है, पहला रिजल्ट क्या है, वाइट है। ठीक है, द रिजल्ट इज वाइट, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न वन। तो जो दो चीज है वाइट और अर्न वन, सबसे पहले हमें, देयर आर टू अर्न्स वन एंड टू, हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अर्न वन। देयर आर टू अर्न्स वन एंड टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अर्न वन, क्या होगा, 1/2, yes. Similarly, what is the probability of choosing earn 2? That is also equal to 1/2. तो पहले हमको जो दो बैग्स है वो दो बैग्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अर्न 1 is 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अर्न 2 is 1/2। ठीक है, क्योंकि हमको पूछा है कि अर्न 1 या अर्न 2 से आए, वो हमको निकालना है। तो पहले हमने इसका प्रोबेबिलिटी निकाला। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, वाइट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अर्न वन। नेक्स्ट हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम द अर्न वन, क्या होगा आंसर, what is the probability of getting white ball from urn 1? Urn 1 contains 3 white and 4 red balls. So it is going to be 3/7. Right. So probability of choosing white ball, हमें खाली white ball से मतलब, we are not bothered about the red balls, क्योंकि हमें result पता है, it is equal to white. तो 3/7. Similarly, urn 2 का लिखा तो क्या आएगा, what is the probability of choosing white ball from urn 2? कितना होगा, अर्न 2 में दो 5 वाइट बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं, इट इज गोइंग टू बी 5/11। इट इज गोइंग टू बी 5/11, तो वी विल गेट 5/11। ठीक है, नाउ बेस थियरम क्या बता, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वाइट और अर्न 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अर्न 1 को और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 1 को हमें न्यूमरेटर में लिखना है। दैट इज अ बेस थियरम। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, सिंस दे हैव आस्क्ड व्हाइट एंड अर्न 1, so we have to write white choosing of earn 1, that is 1/2, and choosing a white ball from earn 1 will be 3/7। इस मल्टीप्लीकेशन को हमें ऊपर रखना है और नीचे जो है दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का एडिशन, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना है यहाँ पे। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब earn 1 into earn 1 and then earn 2 and white ball from earn 2। तो 1/2 into 5/11 दोनों का एडिशन नीचे लिखना है। दिस इज द बेस थियरम। तो जो हमको पूछा है वो दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमें न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब अर्न 1 का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 1 प्लस अर्न 2 का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 2। दिस इज ओनली हैज टू बी डन फॉर द बेस थियरम। जो हमें पूछा है, व्हाइट पूछा है और अर्न 1 पूछा है, तो पहले हमें अर्न 1 एंड अर्न 2 का हमको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, फिर व्हाइट का प्रोबेबिलिटी अर्न 1 का प्रोबेबिलिटी अर्न 2 से निकालना है। उसके बाद हमें अर्न 1 और व्हाइट का पूछा है हमको, सो वी हैव टू कीप द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी, अर्न 1 के दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है and then earn 2 के दोनों probabilities को multiply करना है। That is the what is that, the base theorem. So if you simplify that, we will get the answer as 33/68. Is it okay? Answer 1/2 into 3/7 upon 1/2 into 3/7 plus 1/2 into 5/11. It will be clear. थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, हम समझ में आ जाएगा क्या करना है। I am not explaining the theory part of that, कैसे हमें अप्लाई करना है। दिस ऑलरेडी डन ऑल्सो, इट्स ओनली अ रिविजन।
What is this answer right? 33/68? Yes? Okay. ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है क्या क्या दिया है। पहले हमें पूछा है अर्न 1 और वाइट, तो पहले अर्न 1 का प्रोबेबिलिटी, अर्न 2 का प्रोबेबिलिटी, फिर वाइट, गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम अर्न 1, गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम अर्न 2, एंड देन जो हमको चाहिए उसको ऊपर रखना है, बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी हैज टू बी रिटन इन द डिनोमिनेटर। विल टेक वन मोर that contains 2 coins, one of which is false coin with head on both the sides, and the other is a true coin. When a coin taken at random from the bag is tossed, it gives head. What is the probability that true coin was taken and tossed? हमारे एक बैग में 2 कॉइन्स हैं, उसमें से एक ट्रू कॉइन है, एक फॉल्स कॉइन है। ट्रू कॉइन का मतलब होता है जैसे नॉर्मल कॉइन जहां पे हेड और टेल रहता है। फॉल्स कॉइन कैसा फॉल्स कॉइन है कि दोनों ही साइड में हेड दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉल्स कॉइन, which is a false coin with head on both the sides. Other one is a true coin, but that means it is having head and tail. When the coin is tossed, it gives head. Again हमको रिजल्ट पता है कि हेड है। What is the probability that true coin was taken and tossed? ठीक है, अभी हमको फिर से बेस थ्योरम यूज करना। हमें पता है कि हेड आया है, लेकिन वो हेड कौन से कॉइन से आया है वो हमको निकालना है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉज ऑफ दैट इवेंट। कौन से कॉइन की वजह से वो हेड आया है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू कॉइन। तो ट्रू कॉइन, यहाँ पे 2 टाइप के कॉइन थे, ट्रू कॉइन एंड फॉल्स कॉइन। पहले वो दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ट्रू कॉइन क्या होगा? व्हाट इज, देयर आर 2 कॉइन्स, ट्रू कॉइन एंड फॉल्स कॉइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ट्रू कॉइन? 1/2. What is the probability of choosing a false coin? That is also equal to 1/2. दो ही coins हैं, दोनों का choosing, we are not choosing head now, we are just choosing the coins, true coin and false coin. तो दोनों का आ गया half and half. Next हमें क्या निकाला, रिजल्ट क्या है, head है। So what is the probability of getting head from a true coin? What is the probability of getting a head with a true coin? Again 1/2. What is the probability of getting a head with a false coin? 1. क्योंकि दोनों ही उसका हेड है, दोनों साइड में उसका आंसर हेड है, इट इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि हमेशा हेड ही आने वाला है। तो हमें क्या लिखना है, probability of getting head from a true coin is 1/2. Probability of getting head from a false coin is 1. अभी हमको क्या निकालना है, what is the probability that the true coin was tossed? तो अभी कौन सा ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में ट्रू कॉइन और हेड। ट्रू कॉइन का प्रोबेबिलिटी और गेटिंग हेड फ्रॉम द ट्रू कॉइन का प्रोबेबिलिटी ऊपर रहेगा, और नीचे दोनों का एडिशन का प्रोबेबिलिटी रहेगा। सो व्हाट विल बी देयर इन द न्यूमरेटर नाउ? ट्रू कॉइन का प्रोबेबिलिटी है 1/2, or getting a head from the true coin is 1/2. So we will have 1/2 into 1/2. Yes, 1/4, correct. और नीचे जो है दोनों का टोटल, मतलब true coin and head from a true coin plus false coin and head from the false coin. वो दोनों का एडिशन नीचे लिखना है, and the answer comes out to be 1/3. ठीक है, we can expect this may be under a compulsory question based theorem. पता नहीं मुझे कैसे आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो पूछते ही नहीं थे, इसके क्वेश्चंस ही नहीं आते थे। So this year I'm not sure whether they're going to ask or not. It's already actually हो चुका है ये क्वेश्चन तुम लोग का 12th में, तो may not ask, may ask, I'm not sure. Yeah, next one.
The man is equally likely to choose any one of the three routes C1, C2, C3 from his house to the railway station. The probability of missing the train by the route C1, C2, C3 are 2 by 5, 3 by 10, 1 by 20. He sets out on a day and misses the train. What is the probability that C3 was chosen? क्या हुआ था? ए मैन इज कोई भी यहाँ पे थ्री रूट्स दिए हुए C1, C2, C3. ये थ्री रूट्स से ही goes from his house to the railway station. Okay, the probability of missing the train by these routes are this much. So and then एक बार वो निकलता है और उसका ट्रेन मिस हो गया, तो we know that the event has, मतलब जो हमको रिजल्ट है पता है कि ट्रेन मिस हो गया. What is the probability that the route C3 was chosen? ठीक है, फिर से हमको पता है कि ट्रेन मिस हो गया है, लेकिन वो ट्रेन किससे मिस हुआ है, कौन से रूट से मिस हुआ है, वो हमको निकालना है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट C3 वाज चोजन? ओके, तो नाउ सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? तो यहाँ पे अगर दो चीजें है, एक तो है मिसेस द ट्रेन, दूसरा वाला रूट्स, रूट C1, C2, C3. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाँ, उसके पहले रूट्स का हमें प्रोबेबिलिटी, यस, 1/3 इंटू व्हाट इज दैट, 1/3 इंटू 1/20. ओके, 1/20. ओके, न्यूमेरेटर वाला, ठीक है. सबसे पहले स्टेप क्या आएगा? सबसे पहले हमें तीन रूट्स हैं C1, C2, C3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द रूट C1, there are three routes are given C1, C2, C3. तो probability of choosing the route C1 will be again 1/3. तीन रूट्स है ना यहाँ पे, C1, C2, C3. तो प्रोबेबिलिटी C1 ले लो, C2, तीनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है. Probability of choosing the route C1 is 1/3, C2 is 1/3, C3 is 1/3. वो एक हो गया. नेक्स्ट हमको क्या पूछा है? मिसेस द ट्रेन. So what is the probability of missing the train by the route C1? Probability is already given in the problem. Probability of missing the train by the route C1 is 2 by 5, C2 is 3 by 10, and this is 1/20. It is already given in the problem. Okay? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट रूट C3 वाज चोजन. तो पहले हमें C1, C2, C3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है. प्रोबेबिलिटी तीनों रूट्स का, जो तीनों जो C1, C2, C3 दिए, वो चूज करने का प्रोबेबिलिटी सबसे पहले निकालना है. सो 1/3, 1/3, 1/3, एंड देन मिसिंग द ट्रेन बाय C1, C2, C3. इट्स ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम. अभी क्या पूछा है हमको? C3 एंड मिसेस द ट्रेन बाय द रूट C3. हमें यहाँ पे दिया है C3 एंड देन मिसेस द ट्रेन बाय C3, मतलब C3 का प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द ट्रेन बाय C3, उसको हमें ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में रखना है. तो लाइक हु सेड, विनीत सेड ना, हाँ करेक्ट. सो 1/3 इंटू 1/20 हो जाएगा. बाकी दोनों का सबका एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज. सो 1/3 इंटू 2/5, 1/3 into 3/10, 1/3 into 1/20. That is going to be the addition of all these probabilities. That is in the denominator. So it is 1/15. Is it okay? The answer 1/15. Let's check the answer.
Is it okay? 1/15 आंसर राइट है ना? हाँ, ठीक है. ओके. क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें से कौन सा निकालनी है प्रोबेबिलिटी वो देखना है, और किसको ऊपर रखना है, बाकी सब टोटल वाले को नीचे रखना है. Next one. A newly constructed flyover is likely to collapse. The chance that the design is faulty is 0.5. The chance that the flyover will collapse if the design is faulty is 0.95. Otherwise, it is 0.30. The flyover collapsed. What is the probability that it collapsed because of faulty design? The flyover collapsed. मतलब again हो चुका है. Event has that is the flyover has already collapsed. That is वो हो चुका, उसका मतलब परफॉर्मेंस आंसर आ चुका है उसका, लेकिन हमें क्या निकालना है? It was find the probability that it collapsed due to the faulty design. तो सोचो कैसे करना है. किसका किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? No, the flyover collapsed because of faulty design. तो दो है. One is probability, the chance that the design is faulty is 0.5, and the probability that the design is not faulty is 0.5. पहले हमें faulty design का निकालना है. उसके बाद flyover collapse due to the faulty design is 0.95 and not faulty design is 0.30. So finally answer कैसे ऊपर क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? What will be there in the numerator? Collapsed or faulty design? 0.95 into 0.5. Okay. हमें फॉल्टी डिजाइन, सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है फॉल्टी डिजाइन और नॉट फॉल्टी या गुड. ठीक है. पहले हमें फॉल्टी डिजाइन से हुआ है वो निकालने के लिए पहले ये दोनों का हमें, इट्स गिवन दैट द चांस दैट द डिजाइन इज फॉल्टी इज 0.5, तो उसका उल्टा हो जाएगा, गुड का भी या नॉट फॉल्टी का भी 0.5. उसके बाद क्या हुआ था? इट कोलैप्स्ड. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लाईओवर विल कोलैप्स इफ द डिजाइन इज फॉल्टी? So probability that the flyover will collapse due to faulty design is 0.95, and otherwise it is 0.30. So if it is not faulty, then the probability that the flyover will collapse is 0.30. So now the required probability will be faulty design ka probability multiplied by the flyover collapse due to the faulty design. That is going to be the numerator part. So 0.95 into 0.5 divided by 0.95 into 0.5 plus 0.30 into 0.5. Hope the answer is 19 by 0.76. You write it, 19 by 25 is also same. Raghav, just check this also. Yes? Okay, okay, fine. 19 by 25, yeah, 0.76. Okay.
Next problem. A factory manufacturing television sets gets the supply of components from 4 units ABCD in the following proportion respectively. It was found that the supply received 1%, 2%, 2%, and 3% articles are defective. A television set was chosen at random from the total output and was found to be defective. What is the probability that it came from unit D? तो ट्राई करो कैसे करना है पहले किसका किसका निकालना है हमको डिफेक्टिव एंड इट केम फ्रॉम यूनिट डी तो यूनिट डी पूछा है मतलब पहले एबीसीडी का हमको प्रोबेबिलिटी लिखना है व्हाट आर द सप्लाईज फ्रॉम द दिस यूनिट्स एबीसीडी तो पहले हमें एबीसीडी का लिखना है उसके बाद जो भी डिफेक्टिव पार्ट थे फ्रॉम एबीसीडी वो लिखना है और फिर न्यूमरेटर में डी और डिफेक्टिव का साथ में लिखना है बाकी सबका एडिशन करके नीचे लिखना है ओके तो फर्स्ट पार्ट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ what is that what can supply of components from the unit A 15% which is 15 by 100 that is 0.5 similarly B का 0.20 C का 0.30 and 4 का point that is ABCD 0.35 पहले हमें ABCD का जो दिया है probability it's already given that we get this much of supply फिर हमें लिखना है डिफेक्टिव सप्लाई डिफेक्टिव received from the unit A then what is that defective from unit B C and D तो सबसे पहले हमें लिखना है ABCD का उसके बाद हमको लिखना है डिफेक्टिव्स फ्रॉम ABCD एंड देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है Anybody has got the answer? ABCD का दिया है डिफेक्टिव का दिया हुआ है हमें क्या निकालना है कि इट केम फ्रॉम यूनिट डी डिफेक्टिव केम फ्रॉम यूनिट डी डिफेक्टिव है हमको पता है द रिजल्ट इज नोन वी हैव टू कैलकुलेट द कॉज ऑफ दैट वेदर इट केम फ्रॉम द यूनिट डी सो यूनिट डी का जो प्रोबेबिलिटी है और डिफेक्टिव फ्रॉम यूनिट डी का प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखना है और नीचे सबको ऐड करना है anybody has got the answer so next step will be defective ABCD का डिफेक्टिव है वो हमने लिखना है 1% is 0.01 2% is 0.02 etc Now the required probability 0.477. I think I may have it in fraction. (21 by 44). Okay. Yes, 21 by 44. Is it same as 0.47 again? Yes, no? ठीक है Everything was given in the problem. We have to just substitute in the base theorem. जो पूछा है उसको हमें ऊपर रखना है बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी को नीचे रखना है Next problem.
Man has 3 coins A, B, C. A is unbiased. Unbiased का मतलब क्या होता है? What is the meaning of unbiased? Okay. That means it has like अगर coin है तो उसका head और tail there is no 1/2 probability रहेगा. It is unbiased. It is not moving towards one particular कि हमेशा head ही आएगा या tail आएगा. Then it is not biased. एक तरफ partiality नहीं दिखाता. Impartial. Correct. The probability that head will result, now only A is unbiased. B and C are not unbiased. The probability that head will result when B is tossed is 2/3. Normally अगर एक coin है, अगर unbiased है तो दोनों का head और tail का probability 1/2 आना चाहिए. But here, since A and B are not unbiased, the probability that head will result when B is tossed is 2/3. So tail का 1/3 हो जाएगा. The probability that the head will result when C is tossed is 1/3. If one of the coin is chosen at random and is tossed 3 times, it gives 2 heads and 1 tail. Find the probability that the coin A was chosen. ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या है? 2 heads and 3 tail when we toss it 3 times. When we toss the coin 3 times, the result is 2 heads and 1 tail. What is the probability that coin A was chosen? तो रिजल्ट हमको पता है, लेकिन हमें निकालना है कि वो coin कौन सा है, whether A, B, C, D. So we have to find the probability that the coin A was chosen. तो फर्स्ट हमको ABC का प्रोबेबिलिटी निकालना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द कॉइन A, B and C. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द कॉइन A. ABC में से अगर A चूज करना है तो 1/3, B का भी 1/3 और C का भी 1/3. ओके, सबसे पहले वो वाला पार्ट हो गया. ठीक है, अभी हमें रिजल्ट देखना. रिजल्ट क्या था? 3 टाइम्स टॉस किया था. इट गिव्स 2 heads and 1 tail. ओके, अगर अभी वी नो दैट A is unbiased. ठीक है, अगर तुमने 3 बार टॉस किया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads? सपोज हमारे पास लाइक देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. हेड आ सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड. दैट वे इफ वी सी what is the probability of getting 2 heads, just write down all the possible outcomes when 3 coins are tossed like. ठीक है, तो हेड होगा, हेड टेल होगा, हेड टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल. There are so many possibilities. So just write all the possibilities and tell me what is the probability of getting 2 heads. जस्ट लिखो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं. अगर हम लोग 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी. दूसरा पॉसिबिलिटी है हेड टेल. देन तीसरा होगा हेड टेल हेड. 3/8, दैट इज 8 इज अ टोटल आउटकम. आउट ऑफ 8 3 बार आएगा जब 2 हेड होंगे. व्हाट आर द 2 प्रोबेबिलिटीज? वन इज हेड टेल, अदर वन इज हेड टेल हेड, है ना? Now tail head. Only 3 times you will get 3 heads. बाकी सब जगह you may have 3 heads or 3 tails, or you may have 2 tails. Okay, you have different ways. But only 3 times you will get 2 heads and 1 tail. Is it okay? All of you 3/8 कैसे आया? जो संदीप ने लिखा है वहां पे. Just write all the possible outcomes when we toss 3 coins. Head tail. Head, tail, head. There are so many possibilities. अगर total there are 8 possibilities आएंगे, उसमें से 2 heads का जो probability रहेगा वो होगा 3/8. ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं पता है यहाँ पे? This is actually by using the binomial theorem होता है. ओके, तो
वी नो दैट अभी 3/, इसका आंसर 3/8 ही है ना, इसका आंसर 3/8 है। ये 3/8 कब होता है? जब व्हेन द कॉइन ए इज अनबायस्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग ए का लिखेंगे 3/8 डायरेक्टली वी कैन राइट। तो 3 कैसे आता है? 3C2। 3C2 मतलब हेड हेड टेल, ए कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है हेड टेल हेड, सेकेंड, देन टेल हेड हेड, इसलिए 3C2। वी वांट टू गेट टू हेड्स from the three tosses of a coin, that is 3C2. The combination will be in 3C2, that is 3 ways. And then ये जो है ये हेड का प्रोबेबिलिटी है, और ये जो है ये टेल का प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर। तो यहाँ पे 2 हेड्स एंड 1 टेल, इसीलिए 1/2 जो है वो हेड का प्रोबेबिलिटी है, और 1/2। So if I write in this manner, it is easy to write the results of B and C. Okay, normally it is 3/8, we know that. So isko from the binomial, we have a binomial theorem which states like this NCR 1/, P raised to R and Q raised to N minus R. The same thing we are using here also. So it is 3, just to write, we are writing it in this form just to get the result of B. तो अगर B का लिखना है तो सेम आएगा। B का हेड का प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो टेल का हो जाएगा 1/3। Okay, so 2/3 the whole square, 1/3. How this 2/3 came? It is already given. The probability that head will result when D is tossed is 2/3. तो यहाँ पे लिखना है हेड के बदले 2/3, 2 बार हेड है, 1 बार टेल है, तो 3 कॉम्बिनेशन में आता है ना, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल एंड टेल हेड हेड। देयर 3 combinations. That this combination is 3C2. 3C2 head into tail, or you can have head tail head, that is why 3 multiplied by आ जाता है। This is the probability of 2 heads getting 2 heads and 1 tail from the coin B. Similarly from coin, sorry, this is C actually, not A, this is C. C का probability क्या है? 1/3 हेड आने का। तो यहाँ पे 2 बार हेड है तो 1/3 हो जाएगा, और टेल का है यहाँ पे 2/3। If the head का 1/3, the tail का 2/3 होना ही है, because the total probability is always equal to 1. This is because the coins are biased. B and C coins are biased. That is why we get a different probability. ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। So this same concept we have made use of the binomial theorem, and similarly written for the other 2 coins. So now हमें क्या निकालना है? कॉइन ए और 2 heads and 1 tail. तो कॉइन ए का प्रोबेबिलिटी और देन गेटिंग 2 heads and 1 tail फ्रॉम ए, ये 2 प्रोबेबिलिटीज ऊपर रहेंगे, बाकी सबका एडिशन नीचे आ जाएगा। एंड टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ए वाज चोजन। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। थ्री C2 का मतलब 3 कॉम्बिनेशन में 2 हेड्स आ सकते हैं। 3C2 So tell me the final answer then. What is the required probability? Probability of choosing the coin A multiplied by the probability of getting 2 heads and 1 tail with the coin A, that is the numerator part. Denominator will be this into this plus B into B and then C into C. So the required probability, what will be the answer then? You can simplify. I will simplify just to show you how to write the remaining part. (27/91). Okay. Is it okay? 27/91. Let me check my answer. I got 9/25. मेरा right है कि तुम, I don't know whose is, just check the value.
925 is okay ना? Tejas has got that. Sandeep, just check your answer. ये cancel होता है क्या? नहीं, 25 into 3 is not 91. It's 9 by 25. Okay. एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई भी क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज 2 हेड एंड 1 टेल. दैट इज वाई 2 हेड का 1/2 into 1/2 and 1. इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. 2 हेड एंड टेल्स अगेन 2/3 into 2/3 into 1/3. इट इज नॉट और है तो हमको ऐड करना. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हमें एंड है. 2 heads and 1 tail. That is why we are having 1/2 into 1/2 into 1/2. So it's 9 by 25. Maybe one more we can try. Bag 1 contains 6 blue and 4 red balls. Bag 2 contains 2 blue and 6 red balls. Bag 3 contains 1 blue and 8 red balls. A bag is chosen at random and 2 balls are drawn from it. If both the balls are found to be blue, what is provided? Bag 2 was chosen. It's the same as the first problem, but here you having 2 different types of balls and 2 balls are chosen. I think 2 balls are drawn from it. In the first problem, only 1 ball was drawn. हमारा रिजल्ट क्या है? ब्लू बॉल. देन बैग 2 वॉज चोजन. तो सबसे पहले हमें बैग 1, बैग 2, बैग 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है. बैग 1, बैग 2, बैग 3 का प्रोबेबिलिटी. चूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 1 अगेन 1/3 1/3 1/3. सबसे पहले हमें बैग की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. बैग 1, बैग 2, बैग 3. उसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल from bag 1, blue from bag 2 and similarly from bag 3. वो तीनों का निकालना है. तो सबसे पहले bag 1, bag 2, bag 3 का तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा. Equal probabilities. Now what is the probability of getting two blue balls from bag 1? कैसे लिख सकते हैं उसको? दो निकालना है हमको. अगेन हियर यू हैव अ कॉम्बिनेशन पार्ट. (10C2) तो टोटल हो गया. 10C2 इज द टोटल है क्योंकि बैग 1 में 6 ब्लू है और 4 रेड बॉल्स है. टोटल इज यस टोटल ऑफ बैग 1 इज 6 10C2. करेक्ट. सो व्हाट इज द न्यूमरेटर? हमें क्या निकालना है? 2 blue balls. 6C2, correct. So it is going to be 6C2 upon 10C2. Okay. If you have doubt, you can write that W1 W ऐसे 6 लिखो और फिर 4 को लिखो and get all the possible combinations. Okay, that is why we have to choose 2 blue balls from 6 blue balls. That is why we have 6C2 and total combinations will be 10C2. जितने टोटल है उसको दो का कंबाइन करके 10C2. So it is 6C2 upon 10C2 which comes out to be 1/3. If you have doubt, you can just maybe write all the samples please and then calculate the value. उसको ही simplified form में C में लिखा है combinations 6C2. 2 बॉल हमें 10 में से निकालने हैं. That is a total one. 2 बॉल हमें 6 से निकालने because there are only 6 blue balls. So 6C2 upon 10C2 which is 1/3. Yes, Harshwag said 1/3 earlier also, correct. Similarly, bag 2 का क्या होगा? Bag 2 का choosing 2 blue balls from bag 2. कितने blue balls हैं बैग में? सेकेंड बैग में 2 ही blue balls है, so I can have 2C2. 2C2 is same as 1. Sorry, 2. 2C
2C2 is only one. There is only one option, 2C2. I did 6 by 2. How did you get 6 by 2? 2 by 6. Okay, that is also fine. ठीक है. 2 by 6 लेकिन टोटल तो 10 था ना. आंसर तुम्हारा लेकिन कैसे आया 2 by 6? बैग 1 का पूरा निकालना है ना हमको. You have taken only the blue ball का probability. जितने बैग में जितने बॉल्स हैं उसको निकालना है. Answer comes out to be same here, but 2 by 6 is actually is not right. Okay. Then what is the probability of choosing 2 blue balls from bag 3? What is the probability of choosing 2 blue balls from bag 3? बैग 3 में एक ही ब्लू बॉल है. तो कैसे भी लो 2 ब्लू बॉल्स आने वाले हैं ही नहीं, है ना. बैग 2 में 2 ब्लू बॉल थे, इसके लिए 1 अपॉन आ गया. 1 अपॉन द टोटल जितना भी कॉम्बिनेशन से वो लिखना है. लेकिन बैग 3 में एक ही ब्लू बॉल है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालने का है 2 ब्लू बॉल्स का. तो 2 ब्लू बॉल्स है ही नहीं. So the answer is going to be 0 for the probability of choosing 2 blue balls from the bag 3. That is equal to 0 because there are no 2 blue balls, only one. You will never have 2 blue balls combination. ठीक है, that is equal to 0. अभी हमको क्या निकालना है? Required probability क्या होगी? Bag 2 और choosing 2 blue balls from bag 2. तो 1 by 3 into 1 by 28 ऊपर आ जाएगा और नीचे होगा total probability 1 by 3 into 1 by 3, 1 by 3 into 1 by 28, 1 by 3 into not plus, it is into 0. Okay, plus 0. Total is 0. Okay. 3 by 31. Correct. ठीक है. ठीक है. Then I've given some practice problems. Almost time. 3 by 31. By these two problems, very difficult problems. Okay, we have to just understand what are the probabilities. दो probabilities निकालनी है और जो हमको चाहिए वो उसको उसकी probabilities को न्यूमरेटर में रखना है, बाकी सबको हमें ऐड करके नीचे लिखना है. ठीक है. तो try these two.